Good morning students, welcome to my channel Mona Says. Students, today we are going to discuss class 10th mathematics chapter, that is arithmetic progressions. What is the arithmetic progression? Arithmetic progression is actually a sequence of the numbers such that the difference between the consecutive terms is constant. It is a series of the numbers in which the difference between the consecutive terms means second term minus first term, third term minus second term remains, the difference between these consecutive terms remain same or constant. Now this series can be, students, either increasing order or it can be in decreasing order. So for example, I am giving you an example here. Suppose we have example here. Suppose 1, 3, 5, 7, 9 and so on. So this is a AP arithmetic sequence. Now see, it is the first term, this is the second term, this is third term, this is fourth term, and you will see the difference between these terms, that is 3 minus 1, that is 2, 5 minus 3, 2, 7 minus 5, 2. The difference between these consecutive terms remain constant. So this is a AP series. So likewise students, in other sequences, other series can be given to us कि whether you check that this series is in a AP form or not. तो इस तरह से भी क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि आपको सीरीज दे दी जाए और आपको निकालना हो कि ये जो है सीरीज AP में है या नहीं है. तो अब यहाँ पर इसको आपने ध्यान से देखना है, सीरीज में क्या क्या टर्म्स आती हैं और किस तरीके से आपने डी को, ये कॉमन डिफरेंस को डिनोट करना है. तो आई एम शोइंग यू द सीरीज दैट इज A1, A2, A3, A4, A5 and up to last term, that is the AN. And students, you will see, we will say that this is the first term, this is second term, and so on. This is third term, this is fourth, fifth, and this is the last term, or you can say this is the nth term. तो स्टूडेंट्स, आपको चैप्टर में आगे क्वेश्चंस, हमें डिफरेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, तो लेकिन आपको थोड़े थोड़े बेसिक्स जो पॉइंट्स हैं दैट मस्ट बी क्लियर टू यू स्टूडेंट्स. सो यू विल सी हियर, अब ये जो है दिस सीरीज इन एपी फॉर्म. तो अगर आप यहाँ पर डिफरेंस निकालेंगे, दैट इज द कॉमन डिफरेंस. तो अगर आप यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालेंगे तो ये डिफरेंस किससे डिनोट किया जाएगा स्टूडेंट्स? डी से. डी से. तो डिफरेंस कैसे निकालेंगे? A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3. तो अगर ये सीरीज जो है AP की फॉर्म में है तो इन सभी कंसेक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस आएगा दैट विल बी कॉमन, दैट इज कॉमन. And last one more point I just want to tell you that this is the nth term. तो nth term को आप फॉर्मूला की टर्म में कैसे लिखेंगे? A plus n minus 1 into D. This is the nth term. So this is all about the introduction part of that arithmetic progressions. Now students, now we are going to discuss AP related question of NCERT. Question number 2 I am going to discuss here, that in the chapter what we have given, that first term is given to you and the difference is given to you and you have to find out first 4 terms. I am going to discuss students question number 2 in which आपको फर्स्ट टर्म गिवन है, डिफरेंस गिवन है और आपको फर्स्ट 4 टर्म्स निकालनी है. अब स्टूडेंट्स, आपको अभी मैंने सीरीज डिस्कस करवाई थी, अभी बताया था आपको सीरीज में कि एपी में आप सीरीज को कैसे लिखते हैं, A1, A2, A3, A4 एंड अप टू AN. एंड हियर A1 इज डिनोटेड एज A, A2 इज A plus D, A3 इज A plus 2D एंड A4 इज इक्वल टू A plus 3D. ये आपने किसकी? D की फॉर्म में लिखा है. अब इसी में क्योंकि हमें यहाँ पर what things you have given students, this is first term and the common difference, and you will put both these values in these 4 terms and you will find out the values of first 4 terms. Students, if you will see A means first term you have to find out, then the first term in the first part I am telling you
In the first part, a is 10, so that means first term is 10. Now the second term, a plus d, means 10 plus, and difference is here 10, so that is 20. Next is a plus 2d, a is given to you 10 plus 2 multiply by 10, d is 10 here, so you will find out that a 10 plus 20, that is equal to 30. And in the fourth term, that is a plus, a means 10 and 3 into 10, 10 plus 30, that is equal to 40. So students, you will see here, this is the first term, this is the second term, this is the third term, and this is the fourth term. Likewise, students, you will find out other 4 parts. Now let's discuss the question number 2, second part that we are going to discuss here. Second part में आपको given है a is equal to -2, तो that means first term जो है आप यहाँ पर put करेंगे, first term जो आएगी आपकी that is -2 and d is here 0. तो second term क्या है, a plus 2 means -2 plus 0, that means equal to -2. And the third term, students, you will see here, again you will put the values, -2 plus 2 into 0, that is equal to -2, and the fourth term will also -2 plus 3 into 0, that is equal to -2. So students, again you will see the 4 terms here. This is the first term, this is the second term, third term, and fourth term. So likewise, these 4 terms you will find out in other third part as well, so that you can find out easily, because there is only the simple values 4 and -3 is given to you. Now students, I am going to discuss the question number 4th, part 4. Part 4 में आपको given है यहाँ पर a is equal to -1, so that means a की वैल्यू कितनी है, -1. तो फर्स्ट टर्म है आपके पास -1, and the second term a plus d, that is equal to -1 plus, here is d value क्या है यहाँ पे 1/2, so you will find out here 2, आप यहाँ पर LCM लेंगे, -2 plus 1, that is equal to -1/2. Now students, you will find out the third term, that is a plus 2d. Again you will put the values, -2 plus 2 into 1/2, that is equal to -1 plus 2 से 2 यहाँ cancel हुआ, तो 0. Now the fourth term, that is x plus 3d, that is equal to, students, -1 plus 3 into d की वैल्यू आपके पास कितनी है, here 1/2. So you will find out, students, -1 plus 3/2, that is equal to 2. आपने LCM लिया, -2 plus 3, that is equal to 1/2. तो स्टूडेंट्स, आप यहाँ पर अपना आंसर निकालेंगे. आप आंसर देखेंगे यहाँ पर, दिस इज द फर्स्ट टर्म, दिस इज द सेकेंड टर्म, दिस इज द थर्ड टर्म, एंड दिस इज द 1/2 is your fourth term. So this is the part 4 of the question number 2. Now students, the fifth part is here, that a is given to you -1.25 and d is given to you 0.25, -0.25. Now you will put all both these values here again in here. A is given to you -1/25, so -1.25 you put here, and this is the first term. And in the second term, a plus d, that means -1.25 plus d is given to you -0.25. स्टूडेंट्स, आपने 0 का ध्यान रखना है, नहीं तो 0 से अगर आप इग्नोर करेंगे या उसको केयरलेसली नहीं लिखेंगे तो आपका आंसर जो है वो गलत आएगा. तो यहाँ पर आपने 0 माइनस को लिखा है यहाँ पर, तो आपकी यहाँ पर वैल्यू कितनी आई, -1.25 -0.25, दैट इज इक्वल टू -1.50. दिस इज सेकेंड टर्म. द थर्ड टर्म इज हेयर दैट a plus 2d. तो आपने पुट की वैल्यूज यहाँ पर, a की वैल्यू आपने रखी अगेन यहाँ पर -1.25, 2 multiply by d,
डी मीन्स आपका कितनी वैल्यू है, -0.25, -0.25। अब आपके पास यहाँ पर कितनी वैल्यू आई, -1.25 -0.50, that is equal to -1.75। फोर्थ टर्म दैट इज स्टूडेंट्स a प्लस 3d, आप पुट की आपने वैल्यूज यहाँ पर -1.25 प्लस 3 मल्टीप्लाई -0.25, तो आपके पास वैल्यूज कितनी आई, -1.25 माइनस 0.75, and that is equal to -2. Students, you will see here that first term is this is the first term, this is the second term, this is the third term, this is the fourth term. तो स्टूडेंट्स आपने प्रॉपरली अच्छे से क्वेश्चन को सॉल्व करना है और प्रॉपरली वर्किंग को भी दिखाना है और आंसर में भी प्रॉपरली आपने मेंशन करना है कि दैट दीज आर द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीरीज। स्टूडेंट्स, आपको ये मेरा प्रैक्टिकल जो है अच्छे से समझ आया होगा। इन द नेक्स्ट कमिंग वीडियोज वी विल डिस्कस मोर एंड मोर प्रैक्टिकल्स एंड मोर चैप्टर्स ऑफ द 10th class mathematics. So keep watching my channel Mona Says and like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.